Assalamu alaikum. I'm Mirza Zuhaibik and you are watching my channel. So today I am going to explain the DNA replication in eukaryotes. Our topic name is DNA replication in eukaryotes. What do you say about the DNA replication in eukaryotes? How the DNA replication occur in case of eukaryotes, and what do you say about eukaryotes? First of all, this one is a very common point. That name is the eukaryotes. There are the two type of organism on the basis of the presence or absence of nucleus. The eukaryotes are the organisms that doesn't have a well-defined that have the well-defined nucleus. But on the other hand, the prokaryotes are the organism in which a well-defined nucleus is absent. So, in case of organism with well-defined nucleus, how the DNA replication occur? What is the DNA replication? The DNA replication stand for replica. जैसे एक कॉपी बन जाती है, तो ऐसी एक कॉपी बनने का प्रोसीजर यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक पेरेंटल डीएनए से डॉटर डीएनए का बनने का अमल को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं. सो डीएनए रेप्लिकेशन जो है उसमें हर स्ट्रैंड जो होता है, जो पेरेंटल स्ट्रैंड होता है, बिकॉज अ सिंगल डीएनए स्ट्रैंड कंसिस्ट ऑफ a single DNA or duplex is consist of two different strands, and when both of these are separated from each other, they are untwisted from each other. Each DNA strand in that condition act as a template for a new strand. So the pairing requirement जो है वो होती है हमेशा between purines and pyrimidines, और ये डिक्टेट करता है न्यूक्लियोटाइड की पोजीशनिंग को न्यू स्ट्रैंड के ऊपर. हर जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो एक स्ट्रैंड पे मुश्तमिल है, और मतलब जब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है तो डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद जो हर डीएनए रिप्लेक्स है उसमें एक ओल्डर स्ट्रैंड होता है और एक जो है वो न्यू स्ट्रैंड है. सो चूंकि एक ओल्डर है और एक न्यू वन है, सो दैट्स व्हाई दैट मीन दैट डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज बी अकर बाय द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, because according to semi-conservative model of DNA replication, always the newly synthesized the DNA consists of the one older and one is the new strand. So here is a requirements of DNA replication. So what kind of DNA replication requirements? The first one is the parental DNA. Second is the DNA polymerase enzyme. The third enzyme is called as the primase enzyme. The fourth one is the RNA primer sequence. And then SSBP. What is SSBP? Single stranded binding proteins. And point number six, the requirement number six is the DNA helicase enzyme, and the last one is the DNA ligase enzyme. So DNA replication, where from the DNA replication started? The DNA replication जो है वो हमेशा बहुत सारी जगहों पर जो है वो स्टार्ट हो जाती है. डीप पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन एट ए टाइम एक से ज्यादा जगहों से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हो चुकी होती है क्रोमोसोम के ऊपर. सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो है वो दोनों स्ट्रैंड्स का एक दूसरे से सेपरेट होना जरूरी है. जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखिए तो ये पॉइंट जो है ये शो कर रहे हैं कि ये जो है ये पेरेंटल डीएनए और यहाँ पर एक पेरेंटल स्ट्रैंड है और एक डॉटर स्ट्रैंड है. तो इस डॉटर स्ट्रैंड से पहले मैं अगर बात करता हूँ तो इसमें कुछ यूं है कि जैसे कि ये देखिए यहाँ पर एक एंजाइम है जिसे हम डीएनए हेलिकेज एंजाइम बोलते हैं. दिस इज द एंजाइम that involve in the unzipping of these two DNA strands, the parental strands, or इसको untwist करना. This one is the role of this enzyme name is the DNA helicase. It act like the Caesar, like the cutting of a Caesar to a special type of fabric. So this is about the DNA helicase enzyme. What is the role of DNA helicase enzyme? So the next one is the DNA polymerase. डीएनए पॉलीमरेज जो है वो कभी भी खुद ब खुद जो है वो अटैच नहीं होता. डीएनए पॉलीमरेज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि बाकी जो एंजाइम्स हैं उनसे ये 10 टाइम्स ग्रेटर होता है. और अगर इस डीएनए पॉलीमरेज को देखें तो ये हमेशा ये क्यों इस्तेमाल होता है, ये इतना इफेक्टिव क्यों है? बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज always add the nucleotides from the five end to the three end of that means the replication occur from the 5 end to 3 end, and this is the main role of DNA polymerase enzyme. But it cannot initiate DNA replication on its own. और जब ये अपनी खुद ब खुद रेप्लिकेशन स्टार्ट क्यों नहीं कर पाता, उसकी वजह ये है कि इसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और उस प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पर ऐड होता है एक खास तरह का सीक्वेंस 10 न्यूक्लियोटाइड्स का जिसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द आरएनए प्राइमर.
आरएनए प्राइमर इज अ 10 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, और ये 10 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो है ये एक्चुअली आरएनए प्राइमेज एंजाइम इसको स्टैब्लिश करता है, और फर्स्ट ये जो है ये आरएनए प्राइमेज एंजाइम आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करेगा। देन ये आरएनए न्यूक्लियोटाइड जो है वो अगेन रिप्लेस हो जाएंगे डीएनए न्यूक्लियोटाइड से। लेकिन जब एक दफा प्रॉपर एप्लीकेशन शुरू होती है तो उसके लिए जरूरी है कि पहले एक आरएनए प्राइमर सीक्वेंस बने, और देन आरएनए प्राइमर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके देन जो है वो हमेशा क्या होता है कि वहाँ पे DNA polymerase जो है वो अटैच हो जाता है. So here is some kind of protein there is known that name is SSBP, single stranded binding proteins that prevent from the retwisting or back twisting of the DNA strand. यानी DNA के जो strand है उनको retwist हो भी सकता है. जैसे एक रस्सी है, एक रस्सी है, उसको आप ओपन करो तो जब ओपन करते हो उसके फाइबर्स अलग करते हो, थ्रेड अलग करने की कोशिश करते हो, तो देन उसको आप छोड़ेंगे जैसे ही दोनों स्ट्रैंड्स को तो दोबारा से रिट्विस्ट कर सकते हैं. सेम ऐसे ही डीएनए जो है वो एक हाईली कोएलिंग शो करता है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं. ऐसे ही जब आप उन स्ट्रैंड्स को अनजिप करके उसको छोड़ोगे तो दोबारा से उसकी जिपिंग होने के चांसेस है. सो इन दैट सिचुएशन द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, दीज आर द एसएसबीपी प्रोटीन्स अटैच on this sequence, like these are attached at this region and prevent from the further retwisting of the parental DNA strands. So what do you say about the difference between leading and lagging strand? DNA polymerase जो है वो दो तरह के DNA polymerase जो है वो अटैच हो जाते हैं, एक अपर स्ट्रैंड पे और एक लोअर स्ट्रैंड पे, बिकॉज बोथ ऑफ दीज एक्ट एज अ टेम्पलेट, एक टेम्पलेट के तौर पे काम करते हैं. सो इस वजह से यहाँ पर जो है वो एक जो DNA polymerase है वो हमेशा रेप्लिकेशन करता है टूवर्ड द रेप्लिकेशन फोर्क, और दूसरा मूव करता है अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क. जो टूवर्ड द रेप्लिकेशन फोर्क मूव करता है वो एक कंटिन्यूस सीक्वेंस बनता है उस दौरान, और इस कंटिन्यूस स्ट्रैंड सीक्वेंस बनने की वजह से उस स्ट्रैंड को हम लीडिंग या continuous strand बोलते हैं. While on the other hand, the strand did move away from the replication fork. Replication fork से away move करने वाला जो है वो continuous नहीं होता, वो discontinuous होता है, और उसे हम बोलते हैं lagging strand. For example, in this case, you can see here, this is the DNA polymerase enzyme, and when this DNA polymerase enzyme add these nucleotides, these are the DNA nucleotides, adds from the 5 prime to 3 prime, and here is the movement of this DNA polymerase enzyme टूवर्ड द रेप्लिकेशन फोर्क. फोर्क कहते हैं दो शाखा को, जैसे एक दरख्त है और उसके आगे जाके दो ब्रांचेस अलग अलग हो जाती हैं, सेम ऐसे यहाँ पर भी डीएनए के ये फोर्क बनता है. जो रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ मूव कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम वो लीडिंग स्ट्रैंड बनाता है जो कि कंटीन्यूअस स्ट्रैंड बनता है, और जो अवे मूव कर रहा होता है डीएनए पॉलीमरेज, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. व्हाई दीज मूव अवे फ्रॉम ईच अदर? ड्यू टू their attachment from the three end, their attachment at the position at the three end of the parental DNA strand. So इस वजह से ये three end पे attach हो जाता है, 3 से ये जो है 5 end की तरफ अपना 5 to 3 new strand जो है वो establish करते हैं. So this is about something is about you can say, we say that this is something is about the different strands, leading and lagging strand. When the lagging strand is established, it always be established in small fragments, like the small fragments of 100 to 200 nucleotides fragments in case of eukaryotes. But on the other hand, in case of prokaryotes, it established 1000 to 2000 nucleotides. But in this case, because we are discussing about the replication in eukaryotes, so in that condition, these fragments consist of the 100 to 200 nucleotides. So you can say that this one is present in eukaryotes, this one is wrong, not in prokaryotes, or this one is only inside the body of eukaryotes. So when the polymerase enzyme reach 5 end of lagging strand, जब वो 5 end पे पहुंचता है तो एक और enzyme जो है जिसे हम क्या बोलते हैं, the enzyme name is the DNA ligase. DNA ligase क्या करता है, वो जो है वो दरमियान में जो गैप्स बने होते हैं उनकी दोबारा से अटैचमेंट करता है. जो डीएनए जो है वो होल फिलिंग हो जाती है जो कि फ्रेगमेंट्स के दरमियान में बनते हैं, और उस होल की फिलिंग के बाद उनको प्रॉपर ज्वाइन करना आपस में, जो पेरेंटल और डॉटर स्ट्रैंड है उसे हम क्या बोलते हैं कि कौन सा एंजाइम वहाँ पे रोल प्ले करता है, डीएनए लाइगेस. लाइगेस मतलब छोड़ने वाला. सो दिस इज टोटली अबाउट द डीएनए लाइगेस, एंड दिस वन इज द topic
about DNA replication in eukaryotes. So thank you very much. इंशाल्लाह next time वो next video के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह.